that master Recording device in progress. can take charge of the entire system. Yeah, when it want to take a charge of the system, you send one on hold pin. When hold is received, hold pin receives one. Microprocessor holds. Means you can say microprocessor finishes the current instruction, not the current programmer. Out of hundreds of instruction, the current instruction will finish and leave the buses. Yeah, give the charge of the buses to the micro other master device and send him hold acknowledge. When hold acknowledge is received, the master device will take the charge of the entire system, perform its action, and then send zero on hold pin to indicate it has removed the hold or it has done its task. Now microprocessor can continue. Okay. Okay. Next pin is reset. Reset in basically. It's reset in. And is active low signal. I think you remember what is active low signal is. Active low signal means signal is active when it is low. Signal is active when it is zero. Yeah, active low signal means, I'll just repeat. What is active low signal? Active low signal means when it is zero, it is active. Yeah, low means zero. When zero, it is active. Yeah. So reset in bar. It is reset in bar. So it is a active low signal. What that reset in does, you can see the name itself. It is reset in. Yeah. Now again, it's the input pin to microprocessor. Microprocessor has that pin reset in. Okay. When microprocessor receives zero on this pin, microprocessor will reset. Microprocessor will reset. What is reset? It's like you restart the phone. Yeah, your restart button over there. You can just click on that, and you have option restart or what do you say? Switch off, restart. Yeah, go to airplane mode. So you can just restart your mobile. So mobile will just stop whatever it was doing. Internet, everything will be off, and you just restart again. Okay. Same way, your restart button in computer also. You can restart the computer. Okay. Same way, when this reset pin receives zero, yeah, the microprocessor will reset. It means what? Microprocessor will simply stop working and restart. Now, what do you mean restart actually? See that this will be a bit difficult for you to understand. It's like your computer, whatever it was, you just restart and start from beginning again. So the entire Windows load again, you can see the Windows logo, then the icons and everything. So same way, microprocessor also has some basic program which is working. That program will start working and microprocessor will go to reset mode. Okay. So what happens in reset in pin? Let's revise it. When this pin receives zero, microprocessor will reset basically. Okay. Okay. What do you mean by reset? Microprocessor will just stop whatever it was doing. Yeah. Uh, the other devices also get reset. The other devices of the system also get reset. And microprocessor will start reading program from address 0000. See, microprocessor is connected to memory, and memory has programs. So it may be doing this program with some 500 lines, or maybe doing this program with some 200 lines. Yeah, but there's some basic program stored in the memory at the beginning of the memory address. For example, the memory address starts from 0 and can go up to 3000, 5000. It depends on the memory size. Okay, this is a memory. Understand? So memory means it's a RAM. And microprocessor is continuously in the process of reading some kind of program and executing it. So when this microprocessor reset, the address given to the memory will be 0. Yeah, and start reading program from 0 again. It's like your machine restarts. You start working from 0 again. Okay, you can see the logo of the company. Then slowly the window starts working. The window is loaded, and then you get the icon. You get a password screen. You have to enter the password, and then it is reset. You get a stable screen. Same way, when you reset a microprocessor also does something in the behind the scene, and it becomes stable, and then you can start working with microprocessor. Okay, so it is reset in. Okay,
There's a other pin reset out, which is again related to this reset out pin. It is active high. Here is a normal pin. It's active high pin. What this does? Now this reset out pin is the output pin. When reset in is received to by the microprocessor, as I told you, microprocessor just leave the buses, reset all devices. Now, how all the devices are reset? This pin is connected to all the other devices on the system. So what are devices connected on your system? This pin is connected to all these devices. So when microprocessor receives reset in, microprocessor will stop working, as well as it will send a reset out pin, a reset out signal, 1, to all the devices. So what happens? All the devices also get reset. This will also stop working and they'll start from 0 again. Okay, so ये दोनों को पिन का मतलब सिर्फ 2 लाइन में याद रखना है. Reset in pin is a active low pin. It's an input pin. When microprocessor receives reset in, there is 0 on the reset pin, reset in pin. Microprocessor will just leave the buses, stop working, yeah, and restart from 0 address again. Start working from 0 address again. Okay, and same time it generate a reset out signal also. It generate reset out signal also. This you write for resetting. Okay, what is reset out? This is the output pin. It's active high pin. Yeah, when reset out is given by microprocessor, or we can say start from reset in. When microprocessor receives reset in, microprocessor gives a reset out signal to all the devices which are connected on the system, and all the devices also get reset. Because when microprocessor resets, obviously entire thing should get reset. So, for example, when your computer resets, all the entire working will stop. Printer will stop working. Internet, printer, whatever video, everything start working. Yeah, monitor, keyboard, everything will be restarting. Okay, same way when microprocessor receives or sends reset out, yeah, receives reset in, same time the entire system will get reset. Now, what is this programming? What is the 00 address? That you'll understand as you start programming. So these topics are interrelated. At one point in time, you cannot understand everything because it has so many things to study further also. Okay, तो ये एड्रेस 00 क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, ये अभी हमको सीखना है. ये हमको समझेगा तब हमको समझेगा रिसेट क्या करता है एग्जैक्टली. Okay. Okay, I think we are done. Otherwise, most of the things, not most of them, we have done all the pins. I think even the ready pin also we are done. If anybody remembers, you can send me chat message. Ready pin we are done. Yeah. Yes. So we've done all the 40 pins. Okay, see, I'll start. We have done address bar, address signals, which are AD0 to AD8, if you remember. So these are 8 pins, address data bus, then pure data bus, 8 pins. Yeah. Then you have done interrupt pins, which are 6 pins. Then there are read write, 2 pins. Yeah. Then A0, S1, 2, ALE. Yeah. Then you have done all this reset out and all those. Now, if you count them, this will become this will be address 40 pins, 8, 16, 622, plus this 5, 27. Yeah. Then we have done IO/memory bar. Yeah. Reset in, reset out, hold, acknowledge, SOD, SID. Yeah. So if you count all of them, it will be 40 pins. Okay. X1, X2. Then there are 2 power pins, 2 X1, X2 pins. So if you count all of them, this will become 40 pins. Okay. You can see that we have finished all the 80 pins. Yeah. Any doubts, please ask, because from your side, there should be doubts. ओके अभी ये जो वर्किंग हम लोग सीखा, ये आपको शायद कहीं कहीं पे डाउट्स रह जाएंगे कि भाई एग्जैक्टली क्या करा है, अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा है. सो दिस विल बी क्लियर, मोर एंड मोर क्लियर एज यू स्टार्ट प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग मेक्स द एंटायर आइडिया क्लियर अबाउट व्हाट microprocessor is really doing, how it is really working,
what is address, what is data, what is program. Yeah, that will be very clear. Okay, now we have studied microprocessor different parts like accumulator क्या होता है, ALU क्या होता है, there are some registers. Yeah, then there's a controls unit. There's one register that we just discussed and left it. It is flag register. Yeah, so that register we'll try and understand now. Flag register. Okay. There can be short note on this flag register, or there can be so many single line questions, true, false, fill in the blanks possible on this. What is flag register? Firstly, what is register? Register is like a box where data is stored. How much data? It can be either 8-bit data or it can be 16-bit data. Okay, in microprocessor 8085, we have most of the registers are 8-bit registers. Only few 2-3 registers are 16-bit. Okay. Okay. So this flag register will study. It is again obviously an 8-bit register. I'm drawing it. Yeah, it's a 8-bit register. If you're drawing with me, you can draw. It's okay on the page. Try and you should have at least half page with you because you'll be writing something over here that will require at least half page, at least 8 to 9 lines. So if you're noting down with me, you require nearly half page. Okay, and this you're going to draw on the entire page, almost on the entire page, or you can say 80% of the page will be occupied by this horizontally. Okay, and this is I'm drawing 8 bits over here. So when you draw 8 bits, just try and draw it this way. Draw a box. Then take a half of that approximately, then take half of this again half of this. So that will become automatically 8. So sometimes what happens, students draw the box and they start drawing like this. So something is small, something is big. Yeah, you should not do like this. When you're drawing these bits, you have to draw this so many times now, henceforward. These 8 pins or 8 bits. Okay, so you should draw like this. Draw a box nearly 80%, covering 80% of your page horizontally. Then draw the middle line. Okay, then draw the middle line of this part. Then draw the middle lines of that part, and go on dividing lines. Take bit of all the parts. Okay, okay, that is something about how to write it. Okay, now this is called as D0. This is called as D7. Yeah, it's a 1 byte. 1 byte is 8 bits. I'm drawn. This is 1 bit. So you can store 1 or 0. I'll repeat, I have drawn one register, which is 8-bit register. So there are 8 bits. Yeah, they can store, each of them can store 1 or 0. Okay, combined this can store 8 bits. Okay, this is called as D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Okay, yeah, this is called as, if you remember, okay, that is not required for the time being. Now, these bits can be 1 and 0, and they'll indicate some operation done in ALU, the previous operation done in ALU. What this flag register does? This register indicates the status of the last operation performed in the microprocessor. This register indicates the status of the last operation done by the microprocessor. Okay, it can be like what kind of operation microprocessor is doing. It can be doing arithmetic operation, logical operation, data transfer operations. There are different operations you can do. Yeah. So commonly the flag register is affected when microprocessor performs logical operation, that is and or not, that operation, or it will be affected when microprocessor does arithmetic operations. So generally we can say this flag register is affected or changes when microprocessor performs any arithmetic or logical operation. Okay, I'll summarize the things once I finish this explanation. Yeah, and these bits will indicate what operation was performed in the previous operation. Now these bits are given some special names and their working is fixed. For example, the first bit is called as sign bit. It is written as S. Next bit is called as 0 bit. I'm just writing the names. It's called as sign bit. This is called as, you can write this one by one below the other. I'm drawing it here, but you can write writing one line, one below the other. Okay. So Z is called as 0 bit. Yeah, then 1 bit is unused. Out of these 8 bits, only 5 are used, 3 are unused. Okay. After that, 1 bit is called as parity bit. Parity bit. Okay. Then unused bit.
Then we have over here, sorry, yeah, then there's, sorry, here there is a auxiliary carry bit. Auxiliary carry is called as auxiliary carry. Auxiliary carry bit. Then there is a parity bit. Then unused, and last is called as carry bit. They are given some names. C is carry, P is parity. Okay, let me finish, then you can note down if you want. I'll give 5 minutes. Okay. Now, how these bits are affected? Now, these bits obviously can be either 1 or 0. Yeah, each bit will be 1 or 0. Yeah, and they'll indicate some action. Will show the status. See, so 1 will show some status and 0 will show some status. For example, see, your signal. Red indicates stop, yeah, and green indicates go. So there'll be, let's not assume orange signal. Okay, so if they're red and green, so same signal will be either red or green. So same way, same bit can be either 1 or 0. It'll be 1 to indicate something, 0 to indicate something. Okay, and that's why they're called flag. This is like flag, red flag, green flag. Red flag means stop, green flag means go. Yeah. So same way here, there'll be 2 operations by each bit. So there'll be total 8 operations, you can say, 10 operations. Yeah, each bit will indicate 2 different operations, or exactly two opposite operations. Okay. Now, what is sign bit is, see, understand, the main part of your microprocessor, which is performing some action, is ALU part. ALU is accumulator, temporary register, and the actual ALU, which performs the operation. So this accumulator is 8-bit, temporary register is 8-bit, and then the one value is stored in accumulator, other value is stored in temporary register, and then is given to ALU for performing operation. What kind of operation? Arithmetic logical operation. Okay, and this ALU is also connected to flag register. Okay, the result of ALU is given back to accumulator. If you remember all these operations, do you remember all these operations? Okay, ALU जो part है उसमें ये 3-4 parts है. Okay, accumulator 8-bit register that holds one value, temporary register that holds one value. Then these values are given to ALU for performing addition, subtraction, logical operation. Yeah, and then the result is also stored in accumulator, and ALU flag register is also connected to ALU. So when any operations in ALU, the flag get affected. Yeah, these flags will be affected. Which operation? Arithmetic or logical operation. Yeah, when you perform arithmetic or logical operation. Okay, so with respect to this, I'll explain now everything. Okay, so what is sign bit? What is sign bit? Let's see. See, this accumulator is 8-bit. So this also has D0 bit and D7 bit. Is it? Last bit is D0. Or you can say first bit is D0. The leftmost bit is D7. उसमें भी 1s and 0s stored होते हैं ना. It's a 1 byte. So sign bit is same as the D7 bit of accumulator. When any action is performed in ALU, according to what is value D7 is, that same value will be stored over here. So it will be either 1 or 0 according to what is D7 is. Okay, so this will be same as, same value as D7 bit, which is also called as MSB. If you remember last time I told you, MSB of accumulator. Yeah, this sign bit stores same value, that is same bit as D7 bit of accumulator, MSB, most significant bit of accumulator. ALU में ऑपरेशन होने के बाद जो रिजल्ट यहाँ पे स्टोर होगा, उसके रिजल्ट की वजह से यहाँ इसके बिट्स चेंज हो जाएंगे. Okay? तो इसके D7 बिट में, लास्ट वाले बिट में जो वैल्यू सेव्ड है वो यहाँ पे होगा 1 or 0. So this will be either 1 or 0. Same value as D7 bit of accumulator. That is MSB of accumulator. Okay? ये हम लोग एग्जांपल से बाद में समझेंगे. I'll take one big example to make you understand this. Okay? Okay. Then let's see what is 0. You can write one line if you want, in short. Then you can refer to book. There must be some 2-3 line explanation over there. As I explained, there'll be some explanation given in your book also. Okay? What is 0 bit? 0 bit. Okay, sign bit. तो ये साइन को क्यों बोलते हैं उसको बाद में देखते हैं.
Let's see what is zero bit is. This bit will be 1 if the value, the answer in the accumulator is 0. This will be 1 if the answer in accumulator is 0. So it indicates it's a 0. Answer is 0. To indicate answer is 0, this will be set to 1. Okay. It indicates accumulator का आंसर इसमें जो ऑपरेशन हो गया सब जो मैंने 5 - 5 कर दिया तो क्या हो जाएगा accumulator में 0 आएगा. So to indicate answer is 0. Okay. या फिर मैंने कोई I am decrementing something. So decrement करने के बाद क्या हो जाता है? If I decrement 5, it will become 4. If I decrement value 3, it will become 2. But if I decrement value 1, it will become 0. So because of some reason, the accumulator will get value 0 because of decrementing, because of subtracting, or because of any logical operation. I make it answer 0. So अगर accumulator का आंसर 0 है, ये bit 1 हो जाता है, मतलब सेट हो जाता है. ठीक? अगर आंसर 0 नहीं है, non-zero, any non-zero value, yeah, then will be set to 0. So to indicate 0, to indicate answer is not 0. Answer is non-zero. ओके. फ्लैग में ऑपरेशन नहीं हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है एएलयू में. एएलयू में जो ऑपरेशन बनेगा, आंसर आएगा, उसके हिसाब से फ्लैग चेंज होता है. ठीक. दिस फ्लैग इज कनेक्टेड टू एएलयू. आई एम रिपीटिंग. ठीक. सो व्हेन द लास्ट ऑपरेशन रिजल्ट इनटू 0, द 0 फ्लैग सेट टू 1. व्हेन द लास्ट ऑपरेशन results into 0, yeah, the 0 flag is set. Yeah, it is for set and reset. Set means 1 and reset means 0. I'm just adding set stands for 1 and reset stands for 0. Okay, so flag is set when the answer is 0. Okay, then let's see what is this auxiliary carry. What is that? Auxiliary carries. Okay. Now, when you're performing any arithmetic operation in ALU, there can be carry generated. अब ये carry generate कहाँ से होता है? I'll just show you an example. Suppose you're doing operation like, let's say, 5 + 7. Okay. ये 5 + 7 microprocessor के अंदर कैसे होगा? 5 is, take example in 4-bit form, it will be 0, 1, 0, 1. Basically, 5 is 1, 0, 1. So it will be 0, 1, 0, 1. 7 will be 0, 1, 1, 1. Okay. So ये ऑपरेशन कर रहा है. तो यहाँ पे कैरी कहाँ से आ रहा है? देखो 1 + 1 is 2. 2 means 1, 0. So 1 is placed over here and 1 will be carried. Okay. Again is 1 + 1. So 2 means 1, 0. So 0 is placed here and 1 will be carried. ये जो कैरी हो रहा है इसको कैरी बोलते हैं. Okay. Same way 1 + 1 + 1 will be 3. 3 means 1, 1. 1 will be taken down and 1 will be carried. So again यहाँ पे एक कैरी हो गया. And then this will be 1. So this 5 + 7 is 12 and this is also 12. Okay. तो ये जो कैरी हो रहा है ये देखो कैसे हो रहा है. अभी यहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा है देखो यहाँ पे वो एक्यूमुलेटर और टेम्परेचर का एडिशन हो रहा है. कितने बिट का एडिशन है वो? 8 बिट का. अंडरस्टैंड? सो 8 बिट ट्रांसफर हियर, 8 बिट ट्रांसफर हियर एंड डू द 8 बिट ऑपरेशन. ठीक. 8 बिट ऑपरेशन जब होगा तो उसके अगर 4th बिट से 5th बिट में कैरी हो गया. अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट से सेकंड में कैरी हो गया था. ये देखो ये 1 जो कैरी हुआ था, दिस वाज कैरी फ्रॉम फर्स्ट बिट टू सेकंड बिट. ओके. इवन देयर वाज अ कैरी फ्रॉम सेकंड टू थर्ड आल्सो, इवन थर्ड टू फोर्थ आल्सो. फोर्थ से फिफ्थ में कोई कैरी नहीं गया था. पॉसिबल है कि कभी फोर्थ से फिफ्थ में भी कैरी जा सकता है. सो अगर फोर्थ बिट से फिफ्थ बिट में कैरी हो गया, देन दिस ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग विल बी सेट. या आई विल रिपीट. अंडरस्टैंड? द operation done in accumulator will be 8-bit operation. Yeah, while performing that addition or whatever, if there's a carry generated from 4th bit to 5th bit, that is, in this term we can say D3 bit to D4 bit. See, understand, D0 is first bit, then D1, D2, D3, D4 up to D7. So there's a carry generated from D3 bit to D4 bit. Then this auxiliary carry flag will be set. Okay. Okay. So this is one. When there's a carry generated from D3 bit to D4 bit in the previous operation. इसके पहले जो ऑपरेशन हुआ था, एडिशन हुआ था, इंक्रीमेंटिंग हुआ था या और कोई ऑपरेशन हुआ था, उसके ऑपरेशन में D3 बिट से D4 बिट में कैरी हुआ था. ठीक. If that carry is generated, then this auxiliary flag will be set to 1 to indicate carry हुआ था.
ठीक, ये फ्लैग है, ये इंडिकेशन है, ठीक, ये रिजल्ट नहीं है। ये इंडिकेट करता है कि ओके, इसके पहले वाले ऑपरेशन में D3 बिट से D4 बिट में कैरी हुआ था। ये क्या इंडिकेट करेगा? इसके पहला ऑपरेशन आंसर 0 हुआ था, 1 मतलब 0 था, 0 मतलब 0 नहीं था, नॉन 0 था। ओके, कोई डाउट्स रहेगा तो प्लीज पूछ ले रहो, बिकॉज डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। आप डाउट पूछोगे तो शायद आपके फ्रेंड को भी समझ में आता है, आपके आजू बाजू को समझ में आता है, सबको डाउट रहता है, लेकिन कोई पूछता नहीं, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। Sometimes we by mistake miss something, and because of that the next point is difficult to understand. So if you feel like there's some more point is missing or something is missing, you can ask, because it's total complex technology we are learning, and 100 things are working with this at a time. We are studying one part at a time. We cannot study one part and understand the entire system, is it? It's a part of system, big system, programming, hardware, software, all things are related. When you know all the things, these ideas will be more clear. सो करंटली हम लोग एक एक पार्ट को सीख रहे हैं, एक एक पार्ट सीखने से पूरा सिस्टम नहीं समझ में आता। ठीक, पूरा सिस्टम को धीरे धीरे समझेंगे, फिर एक एक पार्ट और क्लियर हो जाएगा। एज वी गो फॉरवर्ड विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स मोर एंड मोर क्लियर। ओके, अब ये पैरिटी बिट क्या होता है? अगेन रिमेंबर, फ्लैग कभी अफेक्ट होता है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। फ्लैग बिट्स आर अफेक्टेड व्हेन देयर इज सम ऑपरेशन डन इन ALU, which kind of operation? Arithmetic or logical operation, addition, subtraction, incrementing, decrementing, और एंड और नॉट या कॉम्प्लीमेंट, अलग अलग ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन होने के बाद ALU में जो वैल्यू बनता है उसके हिसाब से ये फ्लैग बिट्स सेट या रिसेट होते हैं। ठीक, ओके, मैं लास्ट में एक बार समरी में बता दूंगा सब कुछ। ठीक, ओके, व्हाट इज पैरिटी बिट? पहला बात तो पैरिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज पैरिटी? पैरिटी स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ वंस, नंबर ऑफ वंस इन अ गिवन बाइट ऑफ डेटा। ठीक, सो बेसिकली पैरिटी क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ वंस इन अ गिवन बाइट। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई बाइट लिख दिया, लेट्स से 10111010, तो इसमें ये 8 बिट्स है। ये 8 बिट्स में कितने वन है? 1 2 3 4 5, इसमें 5 बिट्स है, तो इसका पैरिटी 5 है। ठीक, बट वी डोंट से पैरिटी इज 5 और 6 और 10 और 3, वी से पैरिटी इज ऑड और इवन। ठीक, तो इसमें कितने वंस है? तो इसमें 5 वंस है, मतलब इसका पैरिटी ऑड है, या नंबर ऑफ वंस इज odd number of ones, so say it's an odd parity. इसमें और एक यहाँ पे कोई वन होता, so this will become 6 number of ones in one byte. So this is called as even parity. What is odd and even parity? If number of ones in the byte is even, this is called as even parity byte or even parity data. Okay, if the number of ones in a byte, data byte, is odd, it is called as odd parity byte or odd parity data. Okay, तो देखो, this will be 1 if it's a even parity. Okay, 0 if it's a odd parity. अभी आप याद कैसे रहोगे 1 and 0? देखो, O for O ऐसे याद रहो। ठीक है, O के लिए O होता है, 0 के लिए odd, odd के लिए 0 and even के लिए 1। ठीक, okay, so what do you say about this in one line? This parity, the parity bit is set to 1, or parity bit is set if number of ones in the answer is even number of ones. That is, the parity is even. Okay, the parity bit is reset to 0 when the number of ones in the answer कहाँ पे? यहाँ पे answer is number of ones in the answer is odd number of ones. This is a odd parity. Okay, last one is carry bit. पैरिटी का मतलब है नंबर ऑफ वंस, ठीक है ना? पैरिटी स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ वंस। ओके, तो ये कैरी बिट क्या होता है? ओके, कैरी बिट क्या होता है? नॉर्मली इन द ऑपरेशन डन ओवर हियर इज 8 बिट ऑपरेशन। ठीक, ऑल द ऑपरेशंस डन इन accumulator are all 8 bit operations, but it's possible that when this 8 bit operation is done, ninth bit can be generated. Say for example, simple, if you're doing this 2-digit addition, okay, if you're doing some 2-digit addition, then it's possible that third digit can be generated. For example, here only you can see the answer will go beyond 100, so this will be, the answer will be 3 digit, even though you're adding 2 digits. So when you do 2-digit addition, the answer can be 2 digit or it can be
3 digit also, third digit, extra digit can be generated. So same way when you're doing 8-bit operation, after addition, 9th bit can be generated. Or if you're doing subtraction, then from 9th bit it can take the carry. For example, ये अगर subtraction है, उसको carry करना पड़ेगा. So answer will be negative. उसको borrow करना पड़ेगा. Not carry, will be borrowing. So carry bit also indicates borrow. So addition में carry bit carry दिखाता है, मतलब carry हुआ था ऐसा दिखाता है, मतलब carry forward हुआ था, मतलब आगे carry गया था, या फर्स्ट बिट से सेकंड बिट गया था, थर्ड बिट से फोर्थ गया था, या फिर बोरो हुआ था. तो लेकिन ये कैरी बिट क्या दिखाता है, अंडरस्टैंड, जनरली नहीं. दिस कैरी बिट इज सेट टू 1 इफ देयर इज अ 9th bit generated, or we can say carry generated from 8th bit in 8-bit operation, or 17th bit is generated in 16-bit operation. Okay. So microprocessor is normally doing 8-bit operation, but in some cases, few cases, it can do even 16-bit operation also. तो 8-bit ऑपरेशन में जब एडिशन वगैरह होगा या सब्ट्रैक्शन होगा तो वो 8th बिट से एक एक्स्ट्रा बिट 9th बिट बन सकता है एडिशन होने के बाद. 16 बिट होगा तो 17th वाला एक नया बिट बन सकता है. ठीक. तो ये वही इंडिकेट करता है. या फिर बोरो कर, सब्ट्रैक्शन होगा तो बोरो कर सकता है, वो 9th बिट से बोरो करेगा या 17th बिट से बोरो करेगा. ठीक. So this is carry bit. Yeah, if it is set to 1, I'm writing over there short, in short, if carry or borrow, I'm writing in short, carry or borrow, yeah, is generated from 8th bit or 16th bit. It depends on it's a 8-bit operation or 16-bit operation. Okay. It is 0 if there is no carry. कोई भी carry या borrow हुआ ही नहीं था, then this will be 0. Okay. I think it's not clearly visible on the right side part. Wait a minute, just put. My stand is become bit. उसका स्क्रू ठीक से नहीं काम करता है तो कभी कभी यहाँ वहाँ हो जाता है. I'll repeat that carry part. Microprocessor can do either 8-bit or 16-bit operation. Yeah. And while doing this operation, there can be extra bit generated, 9th bit generated, or in case of 16-bit, there can be 17th bit generated. If that 9th bit or 17th bit is generated, then this carry bit will be set to 1 to indicate there was an extra bit generated, 9th bit or 16th bit. Depends on which kind of operation. Okay. So it is 1 if carry or borrow is generated from 8 or 16 bit, 8th bit or 16 bit. Yeah, it is 0 if there is no carry generated in the previous operation. Carry कोई जनरेट नहीं हुआ था तो 0 रह जाएगा. ठीक. सो कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे हो गया, आपने कुछ यहाँ से डेटा दे दिया और यहाँ पे कुछ ऑपरेशन हो गया, तो सारे फ्लैग्स 1 0 हो जाते हैं. सारे फ्लैग्स अकॉर्डिंग टू चेंज हो जाते हैं. कोई 1 होता है, कोई 0 होता है, कोई 0 का 0 रहता है, कोई 1 का 1 भी रह सकता है, बट उसको बोलते हैं अफेक्ट होना. मतलब दे मे चेंज, दे मे नॉट चेंज, बट बेसिकली कोई 0 का 0 भी रहता है ना, वो भी चेंज है बिकॉज वो 0 हुआ, 0 का ही 0 हो गया बिकॉज वो ऑपरेशन ने उसको 0 किया, ऐसा एज्यूम हो जाता है. ठीक. वो 0 का ही 0 हो गया तो भी वो 0 चेंज हुआ, ऐसा एज्यूम हो जाता है. ठीक. ओके. तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है और कैसे अफेक्ट करता है. ठीक. तो एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा स्मॉल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड. ठीक. एक बार पहला तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, फिर उसको एक बार रिपीट भी कर लूंगी. ठीक. आपको रिपीट करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, अपने आप समझ में आएगा क्या हो रहा है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट वी आर डूइंग डू एडिशन ऑफ 2 नंबर्स. लेट्स से एक नंबर है B5 हेक्साडेसिमल नंबर्स होता है. ठीक. एंड द अदर नंबर इज आई एम एडिंग इज सपोज 7 3, और लेट्स टेक बिगर नंबर सो दैट here also take some big number, let's say. Okay. So B7 and 8A ये दो नंबर हमको ऐड करना है. ठीक. तो पहला मैं यहाँ पे लिखता हूँ B7. How that B7 look like? B7 8 बिट में. ठीक. कैसे लिखें? B is 11. 11 is 1 0 1 1. B हो गया 7 will be 0
1 1 1, ये हो गया बी। ओके, 8A कैसे लिखेंगे? 1 0 0 0, ये हो गया 8। A is supposed to be 10, 10 is 1 0 1 0। अभी इसको हम लोग ऐड करने वाले हैं, ठीक है, हमको ये ऑपरेशन करना है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, या फिर माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशन कर रहा है तो कैसे चलेगा, दिस टाइम से, ठीक है। अभी एडिशन कैसे करेगा? 1 + 1, देखो ये D7 है, दिस D7, आपसे तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आपके लिए इजी रहेगा। ये दिस इज डी, सॉरी दिस इज D0, सॉरी आई मेड मिस्टेक, D0, दिस D7, ठीक। समझने के लिए मैं अलग कलर में लिखता हूँ, दिस इज लेट्स से D0 एंड दिस इज D7, ठीक। हम लोग उसका एडिशन कर रहे हैं, तो एडिशन कैसे होगा? देखो 1 + 0 विल बी 1, अभी तक तो कोई कैरी नहीं, वैसे इस ये कैरी से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी, ठीक। 1 + 1 इज 0 1 कैरी, 1 + 1 इज 2 मीन 0 1 1 कैरी, यहां से 1 + 1 इज 0 1 कैरी, ठीक। मैंने इसको अलग अलग लिखा है 4 4 बिट में, ताकि आपको समझ में आएगा। ये बी है, ये 7 है, फिर ये 8 है, ये ए, ठीक है। ओके, देन दिस 1 + 1 विल बी 0 1 कैरिड, 1 + 1 विल बी 0 1 कैरिड, ये 1 है, फिर यहाँ पे 1 + 1 1 एंड दिस 1 विल बी कैरिड। देखो अभी ये 8 बिट्स है, ये काउंटर में रह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आंसर काउंटर में जाएगा। बाय द वे ऑपरेशन कहाँ पे हो रहा है? दिस माइट बी इन एक्यूमुलेटर, दिस माइट बी इन टेम्परेचर, देन दिस विल बी गिवन टू ALU, ALU will perform the operation एंड रिजल्ट विल बी गिवन टू एक्यूमुलेटर। तो अभी आंसर एक्यूमुलेटर में जाएगा, तो एक्यूमुलेटर 9th बिट रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है, तो ये हो गया कैरी। ओके, तो अभी यहाँ पे ये ऑपरेशन होने के बाद ये फ्लैग्स कैसे चेंज हो गए, ठीक, वो देख लेते हैं। ओके, चलो ये वाला फ्लैग क्या है? साइन बिट, यहां से चालू करें। साइन बिट क्या होता है? इट इज सेम एज द D7 वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर, D7 ऑफ द एक्यूमुलेटर इज 0, सो ये 0 हो जाएगा। इट डिपेंड करेगा प्रीवियस ऑपरेशन क्या होता है, उसके हिसाब से 1 से 0 चेंज हो जाएगा, ठीक। ओके, जीरो फ्लैग क्या होता है? इट इज 1 इफ द आंसर इन द एक्यूमुलेटर इज 0, एक्यूमुलेटर का आंसर 0 है क्या? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 टू इंडिकेट आंसर इज नॉट 0, या 0 इफ द आंसर इज नॉट 0। ओके, ऑक्सिलरी कैरी क्या होता है? इफ देयर इज अ कैरी जनरेटेड फ्रॉम D3 बिट टू D4 बिट। ओके, ये देखो कौन से बिट्स है, ये D0 D1 D2 D3 और ये D4, ठीक, ये D3 है, ये D4 है। तो D3 से D4 में कैरी हुआ था, ये यहाँ पे देखो D3 से D4 में कैरी हुआ था एक, है ना, जब ये 1 + 1 ऐड हुआ था तो यहाँ पे 1 कैरी हुआ था, तो यहाँ से D3 से D4 बिट में कैरी हुआ था, तो ये बिट हो जाएगा 1। ओके, देन लेट्स सी व्हाट इज पैरिटी बिट। पैरिटी बिट सेज व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वंस इन द आंसर। आंसर, आंसर मतलब सिर्फ ये वाला, यहां से यहां तक, ये इसको कंसिडर नहीं करेगा, ठीक। तो इसके आंसर में कितने नंबर ऑफ वंस थे? तो 1 एंड 2, देयर आर 2 वंस इन द आंसर। इसके आंसर में 2 वंस हुआ है, ठीक है, देयर आर 2 वंस, मींस इट्स अ इवन पैरिटी। इवन पैरिटी मतलब क्या होगा? दिस विल बी सेट टू 1। ओके, एंड देन कैरी बिट। कैरी बिट कभी सेट होता है? कैरी बिट इज सेट इफ देयर इज अ कैरी फ्रॉम टेकन आउट फ्रॉम D8 टू D9, मतलब एक 9th बिट अगर एक्स्ट्रा बन गया, एक्स्ट्रा कैरी बन गया आउट ऑफ दिस 8 बिट्स, देन दिस इज कॉल्ड एज कैरी। तो ये जो कैरी हो जाता है उसका वैल्यू यहाँ पे लिखता है हमको। कभी 0 भी कैरी होगा तो ये 0 हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो कैरी, 0 कैरी मतलब नो कैरी। तो दिस विल बी योर वैल्यूज आफ्टर दिस ऑपरेशन इज डन, दैट इज हाउ द फ्लैग्स आर अफेक्टेड। एंड ऑब्वियसली जो अनयूज्ड है इनको हम लोग 0 एज्यूम करेंगे, सो दिस विल बी द फाइनल वैल्यू इन फ्लैग रजिस्टर। साइन इज 0, 0 is 0, auxiliary carry is 1, parity is 1, and then carry is also 1 in this example. Yeah, if you want, you can note down the example also, how the flags will be affected. See, now the entire cycle is finished. अभी हम लोग उसको पूरा डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक। Now it will be 5 minutes, you can note down whatever you want to note down, think over it and ask me doubts. Flag ratio will be very much useful in further discussion again.
Like beta, I can't see any chat message. Anybody has sent in chat message? No. No chat message. Fine. See, I'm using mobile, so it's pretty difficult to handle the screen. The screen is so small, 6 inches screen that I have to handle the things. So if there's doubt, you can raise hand and ask doubts. Audio video quality is also okay, I think. You can, it is clearly visible. The things I'm writing is readable, I think. We can take screenshot, you can note down afterwards, whatever way. I'll give 5 minutes. इसको note down करना note down कर सकते हैं. Set means once, reset is 0. Always. When I say bit is set, means bit is set to 0 or bit is 1. Okay, bit is reset means bit 0 हो गया. Bit का value 0. Bit के लिए होता है set and reset is for bit. Any bit, set or reset. Like parity bit is set or reset. Carry bit is set or reset. Okay, so I'll just do the small revision of entire thing. Yeah, what is flag register? It's a 8-bit register. Yeah, out of which 5 bits are used, 3 are unused. This bit indicate these bits will change according to the whatever operation done in the ALU. Yeah, whenever there is any arithmetic or logical operation performed in ALU, the flag bits will get affected. Yeah, the flag bits change from 1 to 0, 0 to 1, or they'll remain 0 or 1 also. Okay. According to the positions, they are given some names: sign bit, 0 bit, auxiliary carry, parity, and carry. Okay. Okay. Now 1 indicates something, 0 indicates something. Fine. So there are 2 positions it indicates. You can say there are total 10 different indications. Yeah. Sign flag. The first bit is D7 is sign flag. Okay. Sign bit or sign flag. Its value is same as the D7 bit of accumulator. Accumulator का जो D7 bit होगा last result में, वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगा. 0 होता तो 0, 1 तो 1. ठीक. Okay. 0 flag is set to 1 if the answer is 0. If the answer in accumulator is 0, if the entire answer in accumulator is 0, then 0 flag is set. Otherwise, it's reset. If the answer is non-zero. Auxiliary carry flag is set if there's a carry generated from 3rd bit to D3 to D4, or you can say 4th bit to 5th bit. D3 to D4 is 4th to 5th. हाँ? हमारे normal counting में 4th bit to 5th bit. उसके counting में D3 bit to D4 bit, because D3 is 4th bit. Okay? If carry generated from D3 bit to D4 bit, auxiliary carry flag is set. Otherwise, it is reset. Okay? Parity. What is parity? Number of ones in the answer, or number of ones in a given byte. Okay? So number of ones के हिसाब से it can be even parity or odd parity. Even parity means number of ones are even, and odd parity means number of ones are odd. Okay? So parity flag कभी set होता है? Parity flag is set if it is even parity. It means the number of ones is even number of ones. It is 0, there are odd number of ones. Okay. Lastly, carry bit. Carry bit is set to 1 if there is a carry or borrow generated from 8th bit or 16th bit operation. Yeah, if there's a carry generated from or borrow generated from 8th or 16th bit. For example, in this case, we have done the 8-bit operation. It involves 8 bits, so 8-bit operation. There was a carry generated from 8th bit outside the accumulator. So there was 9th bit generated. So there was a carry generated. It means this carry will be set in my case. Okay, so ये example में carry set हुआ था. If there is no carry generated from here,
there's no borrow taken from 9th bit, or there's no carry generated from 9th bit, then that bit will be 0. If there is no carry or borrow generated from this, बीच वाले के लिए नहीं, सिर्फ ये वाले के लिए, ये bit के लिए, only last bit, 8th bit or 16th bit, depends on it's a 8-bit operation or 16-bit operation. And this flag register is used a lot in programming. ठीक है, जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो बिट्स का बहुत फायदा होगा हमको, फ्लैग्स का. Okay, I think you have noted down whatever you wanted to note down. You have noted down the example also. Okay, so I think we can go for next topic. This can be short note, explain flag register, 4 marks. You have to draw it, write all those things in one or two lines each. And if you want, you can give an example like this. You can just remember this example only. From here, you can explain कि bits कैसे set हो गए यहाँ पे. Okay, so the next chapter I'll start is chapter 2 of CS2. CS2 का next chapter is programming with 8085. Actually, it's called as instruction set and programming with 8085. Okay, my handwriting is not very good. It's readable but not good. So if anything is not readable, it's not clear, please ask. Yeah. So the second chapter of CS2, instruction set and programming with 8085. This is going to be longest chapter. Yeah, and a difficult one for some students. Some students will find it interesting, really easy topic. Some may find it difficult, complex, boring, or whatever. Okay, but if you take interest, really interesting, a very nice topic. Obviously, it's a difficult one. Yeah. So let's start this. इसका I'll send you this thing, PDF बना के सेंड कर दूंगा आपके ऑफिस में. तो ऑफिस से फिर आपको रिसीव हो जाएगा. आपका कोई ग्रुप रहेगा तो पूरे ग्रुप में वो रिसीव हो जाएगा. यू कैन रीड फ्रॉम दैट ऑल्सो फॉर रेफरेंस के लिए पढ़ो. ये शॉर्ट नोट्स है या नोट्स है ऐसे करके मत पढ़ो. दिस इज लाइक फॉर रेफरेंस ओनली. ठीक, बिकॉज मैंने सीखा है तो मैंने जो लिखा है वो आपको ईजी रहेगा पढ़ने के लिए. सो वो पढ़ो, फिर समझने के बाद आपके बुक्स में भी पढ़ो. ठीक, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Yeah. So let's go for next topic, instruction set and programming with 8085. So next topic. तो यहाँ पे हमको क्या सीखना है? We'll be studying the entire instruction set of 8085. अभी instruction set में कितने instructions है? If you remember, we studied the features of 8085. That we talked about. There are nearly 75 different instructions. There are nearly 75 different instructions. ठीक, तो 75 में से कुछ जो है वो इजी है समझने के लिए, पॉट आउट हो जाएंगे. और कोई इंस्ट्रक्शन को 75 इंस्ट्रक्शन सीखना. ठीक, सो सम इंस्ट्रक्शन टेक 1 minute 2 minutes to understand, some will take 10 minutes to understand, some may take hardly 5-6 other which will take nearly 10-15 minutes to understand one instruction. So you can assume, you can understand how much time it will take. Yeah, if you assume 4 minutes per instruction average, this will become nearly 75 into 4. Yeah, so it will be nearly 300 minutes. So this will go for at least 5 to 6 hours. Okay, more than that. Because I have to take examples also. Then some programs also with them.
Okay, so with examples, with programs, this take long time. Yeah, and don't worry, the instructions are easy. Very few are a bit complex, but once we explain, they'll become easy. Okay, so some points you have to remember. It has nearly 75 different instructions. Okay, using these instructions, we can write programs. Okay, okay. अब ये जो instructions है, ये instructions कैसे होते हैं? All the instructions are nothing but one byte code. Okay, so one byte code, one byte hexadecimal code. I think ये भी हम लोग डिस्कस किया था. They are the hexadecimal codes or hexadecimal numbers, जिसको हम लोग बोलते हैं opcodes. They're called as opcodes. Okay, every instruction is one byte hexadecimal number, basically hexadecimal code, hexadecimal number, and that number is called opcode. As in case of C++, we have instructions like cout, cin, hash include, yeah, clear screen, whatever you're written. Okay? So यहाँ पे ऐसे नहीं होते, यहाँ पे words नहीं होते, यहाँ पे hexadecimal numbers होते. They are instructions. Okay. Okay. Now, what kind of instructions are there? There are 5 kind of instructions over here. So the types I'm writing over here. What types of instructions are there? All this instruction set is divided into 5 different categories. Okay? First is called as data transfer instructions. Data transfer. तो ये क्या करते हैं? डेटा को सिर्फ ट्रांसफर करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, रजिस्टर टू मेमोरी, मेमोरी टू रजिस्टर, या रजिस्टर टू रजिस्टर, ऐसे ट्रांसफर हो सकते हैं. एक जगह से दूसरी जगह पे सिर्फ डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करेंगे, सिर्फ डेटा को ट्रांसफर करेंगे. ठीक, अलग अलग टाइप का डेटा ट्रांसफर होता है. नियरली 20 instructions are there just for data transfer. Yeah. Okay. Next category is, we can say, arithmetic operations or arithmetic instructions. Arithmetic instructions. Second category. यहाँ पे क्या आता है normally? Addition, subtraction, increment, decrement. Yeah, ये सब operation arithmetic operations में आएंगे. Okay. Third category is called as logical operations or logical instructions. तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस कौन से, जहाँ पे एंड, और, कॉम्प्लीमेंट, शिफ्ट, रोटेट, ये सब इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आएंगे. ठीक, जब इंस्ट्रक्शन करेंगे तो मैं बताऊंगा, अभी तो आपको लिखने का जरूरत नहीं, जस्ट यू कैन नोट डाउन द नेम्स, टाइप्स. ठीक, लॉजिकल कौन से होते हैं? एंड, और, कॉम्प्लीमेंट, या शिफ्टिंग, रोटेटिंग, ये सब यहाँ पे आएंगे लॉजिकल ऑपरेशंस. ठीक, नेक्स्ट आर कॉल्ड एज ब्रांचिंग एंड लूपिंग इंस्ट्रक्शंस. अभी इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करेगा. Branching and looping instructions क्या होता है? This we'll see afterwards only. Okay, branching and looping instructions. Branching and looping. अगर आपको अपने C++ किया है तो आपको if else वगैरह मालूम होगा. तो जैसे if else होता है या for loop होता है, वैसे हम लोग इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी लिख सकते हैं. अगर आपको याद होगा तो अच्छा है, नहीं तो भूल जाओ. ठीक, if else लिखते हैं, for loop लिखते हैं, while loop लिखते हैं, तो वहाँ पे जैसे प्रोग्राम जंप करता है या लूप करता है, वैसे यहाँ पे लूपिंग वगैरह कर सकते हैं. ठीक. Then last category is called as machine control instructions. Machine control. Machine control instructions. ये machine control instructions क्या करेंगे? Machine control instructions are like instruction given to the microprocessor. Microprocessor का controlling, microprocessor को control करने के लिए, microprocessor का generally working control करने के लिए machine control instructions काम आएंगे. जैसे तुम्हारा मोबाइल है, तो मोबाइल में तुम व्हाट्सएप चालू करते हैं, व्हाट्सएप में कुछ डेटा सेंड करते हैं या फोन कॉल करते हैं, तो ये फोन का तुम नॉर्मल यूज करो, फोन का तुम एप्लीकेशन करो, फोन को यूज करो. ये फोन में एक सेटिंग भी होता है ना, मोबाइल फोन में एक सेटिंग भी होता है, वहां से हम लोग फोन को सेट करें, इंटेंसिटी कितना चाहिए, वॉल्यूम कितना चाहिए, अलार्म कितने बजे बनना चाहिए. ये हो गया आपका कंट्रोल. आप फोन को खुद को कंट्रोल करें, या उसका क्या होना चाहिए, और कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, नाइट मोड होना चाहिए, एयरप्लेन मोड होना चाहिए. तो या फिर खुद मशीन को कंट्रोल करें. आप कोई काम नहीं करें उससे, फोन से, आप सिर्फ मशीन को कंट्रोल करें. ठीक, मशीन कैसे काम करना चाहिए, तो उसको बोले मशीन कंट्रोल, मतलब माइक्रोप्रोसेसर का वर्किंग को कंट्रोल करें. ठीक, सो देयर आर 5 कैटेगरीज ओवर हियर. डेटा ट्रांसफर, वेयर डेटा इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, या मोस्टली इट्स 8-bit ट्रांसफर. 8-bit एक साथ ट्रांसफर हो जाएंगे, या फिर इट कैन बी सम केसेस 16-bit ट्रांसफर आल्सो. ठीक, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ऑल द ऑपरेशंस आर 8-bit operations, very few operations are 16-bit operations. Logical operations, all are 8-bit operations, and or complement, shift, rotate, ये सब इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आएंगे. ठीक,
ओके, नेक्स्ट कैटेगरी इज ब्रांचिंग एंड लूपिंग. ब्रांचिंग एंड लूपिंग, यहाँ पे हम लोग इफ एल्स या लूपिंग इटरेशन कर सकते हैं. मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, द इंस्ट्रक्शन विच विल कंट्रोल द वर्किंग ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. ठीक, ये 5 अलग अलग कैटेगरीज है. ओके, एक प्रीवियस वाला एक लेक्चर में मैंने ऐसे आपको एक स्क्रीन दिखाया था, वहां पे मैंने बोलता ये याद रखो, ये आपको कोई पूछेगा नहीं, बट दिस इज बेसिक्स व्हाइल लर्निंग पेज रेट. वही मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट करता हूँ. फर्स्टली, ऑल योर डेटा इज इन हेक्साडेसिमल फॉर्म. ठीक, ऑल डेटा, ऑल एड्रेसेस आर इन हेक्साडेसिमल फॉर्म. ठीक, सब कुछ नंबर्स होते हैं एंड देयर नंबर्स आर इन हेक्साडेसिमल फॉर्म. ठीक, फाइनली इट इज इन बाइनरी फॉर्म. मतलब और डीप में जाओगे तो 1s and 0s है. फॉर एग्जाम्पल हेक्साडेसिमल ए, तो 1010, तो ये है तो हेक्साडेसिमल डेटा, लेकिन फाइनली स्टोर कैसे होगा? बिट फॉर्म में. अगर वो 8 बिट डेटा है तो वो 8 बिट में स्टोर होगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ इट्स A0, so it'll be 1011, which is 1010 is A, which is 10, and 0000, ये मिलके आपका A0 हो जाएगा. ठीक है, ये सब अभी हम लोग देख लिया. ठीक, तो इट इज इन द हेक्साडेसिमल डेटा फॉर्म. सारे डेटा वैल्यू, सारे एड्रेसेस हेक्साडेसिमल में हो गए. यहाँ पे डिजिटल डेटा, डेसिमल डेटा का बात ही नहीं करेंगे. ठीक, when I write 5, yeah, when I write 5 hexadecimal, when I write 15, this is also hexadecimal. ये हेक्साडेसिमल है, ऐसे एज्यूम ही करना है. ठीक, डेटा सारा हेक्साडेसिमल फॉर्म में ही होगा. ऑल इंस्ट्रक्शंस, ऑल डेटा, ऑल एड्रेसेस, या ऑल इवन इंस्ट्रक्शंस आल्सो, ठीक, आर इन द hexadecimal binary form, right? Okay, then we studied that one byte represents 2-digit data. ये भी याद होगा आपको, मैंने बोला था याद रखो ये. या 1 byte data will be always 2-digit data, okay, which is 00 to FF in hexadecimal. Okay, same way 16-bit data or 2 byte data. Okay, 2 byte data में 16-bit data will be a 4-digit data in hexadecimal form. 0000 से लेके FFF तक. So data will be either 1 byte or 2 byte. 3 byte वगैरह नहीं होता, 3.5 byte नहीं होता है, 1 byte or 2 bytes, या 1.5 byte नहीं होता. Okay, data will be either 1 byte, that is 8 bits, or means 2-digit form, or will be 2 byte form, which is 16 bit, which is 4-digit form in hexadecimal. ओके, अभी हम लोग जो इसको लिए इंस्ट्रक्शंस जो यूज करेंगे, वो जो लैंग्वेज होता है, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड एज मशीन लैंग्वेज. ठीक, तो ये वर्ड्स में बार बार यूज करेगा. अब इसके आगे मैं वापस से बार बार एक्सप्लेन नहीं करेगा. दिस नाउ इट्स अंडरस्टूड नाउ. ठीक है, ये आपको समझ गया कि डेटा कैसे होता है वगैरह, ये हम लोग एज्यूम करेंगे. ठीक, द लैंग्वेज दैट वी यूज इज कॉल्ड एज मशीन लैंग्वेज, और इज आल्सो कॉल्ड एज असेंबली लैंग्वेज. ठीक, तो ये वर्ड्स में बार बार यूज करेगा, सो आपको अभी इसके आगे ये सब याद रखना है. ठीक, द लैंग्वेज दैट यूज फॉर प्रोग्रामिंग is called as machine language or assembly language. ठीक है, जैसे C++ लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, वैसे एक लैंग्वेज है, इसका नाम है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज. ठीक, तो ये प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे करते हैं थोड़ा सा रफली बता देता हूँ. देन यू कैन देन वी स्टार्ट विद द एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस. ठीक, ये सारे इंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ेंगे 75. ठीक, ओके, मैं कोई ABCD वाइज नहीं जाऊंगा या फिर कोई ग्रुप वाइज नहीं जाऊंगा, मैं इजी से डिफिकल्ट जाऊंगा. ठीक, जैसे समझने के लिए इजी होगा वो वैसे ऑर्डर में जाऊंगा. ठीक, नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द बुक्स दे आर गिवन इन ABCD फॉर्मेट बिकॉज देयर आर 75 इंस्ट्रक्शंस आर देयर. इन व्हाट ऑर्डर दे शुड प्लेस, सम ऑफ द बुक्स आर गिवन इन दिस ऑर्डर: डेटा ट्रांसफर, अरिथमेटिक, लॉजिकल, ब्रांचिंग, मशीन कंट्रोल. सम ऑफ द बुक्स आर गिवन ABCD वाइज, A वाले पहले इंस्ट्रक्शंस, फिर B वाले, फिर C वाले, ऐसे लास्ट में जो भी Z है, X है, वहां तक इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन किए कोई कोई बुक्स में. और दैट if you see the books, if you turn the pages, there are nearly 75 pages, nearly 35 to 40 pages are taken just for explaining the instructions, because there are 75 instructions. एक पेज में एक या दो इंस्ट्रक्शंस, ऐसे करते करते 75 इंस्ट्रक्शन टेक nearly 35 to 40 pages. आप कोई भी बुक खोलो आपका, उसमें ऐसे ही होगा. Some books are given in ABCD format,
सम बुक्स आर गिवन इन ग्रुप फॉर्मेट। मैं ग्रुप में या एबीसीडी फॉर्मेट में नहीं जाऊंगा, मैं एक सर्टन लेवल से, सिंपल लेवल से चालू करके उसको डिफिकल्ट लेवल तक जाऊंगा, और लास्ट में ऐसे इंस्टीट्यूट करेंगे जो ज्यादा काम नहीं आते, जो हमारे काम के नहीं, एग्जाम में तो आ सकते लेकिन हमको उसका बार बार रेफरेंस नहीं आएगा। फर्स्ट इनिशियल इंस्ट्रक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिंपल इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर यूज्ड इन एवरीवेयर, ठीक है, जिसका सब जगह पे यूज होगा, ठीक, इन दैट ऑर्डर, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट विल सी कि नॉर्मली हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे कैसे और क्या करेंगे इसमें, ठीक। तो देखो मैं आपको वो किट याद कराता हूँ, रिमेंबर दैट किट इज देयर, ठीक। तो इसमें दो चीज मेन है हमारे पास, एक होता है माइक्रो प्रोसेसर विच इज गोइंग टू एक्चुअली परफॉर्म द टास्क, म्यूपी और एमपी इज माइक्रो प्रोसेसर, एंड देयर इज अ रैम, मेमोरी, ठीक। और यहाँ पे एक कीबोर्ड है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिखता है, ठीक, आपको याद होगा, उस मैंने आपको बताया था, ठीक। ये कीबोर्ड से आप प्रोग्रामिंग करोगे, ठीक। जो आप प्रोग्रामिंग करें वो रैम में स्टोरेज है, कहाँ पे, एक सर्टन लोकेशन में उसको स्टोर करोगे। समझो यहाँ से मैंने एक 20 लाइन का प्रोग्राम लिख दिया, सो स्टार्ट फ्रॉम 1000 एग्जांपल, 1000 एड्रेस से लेके 1020 तक। एक्चुअली 1020 नहीं होता बिकॉज ऑल द एड्रेस आर हेक्साडेसिमल, या 20 सपोज टू बी 14, ठीक। सो 1014 एड्रेस तक ये स्टोर हो जाएगा। सी अंडरस्टैंड, अभी हम लोग प्रोग्रामिंग चालू नहीं किया, प्रोग्रामिंग तो हम लोग सीखेंगे एक एक करके, ठीक। अभी मैं तुमको प्रोग्राम कैसे लिखते हैं या कैसे बनता है वो बताऊंगा। आपका कीबोर्ड का यूज करके आप कीबोर्ड से ये इंस्ट्रक्शंस टाइप करेंगे। इंस्ट्रक्शंस आर इन द व्हाट फॉर्म, हेक्साडेसिमल कोड, तो आप कोड टाइप करोगे, ये कोड यहाँ पे सेव होते जाएंगे, ठीक। पूरा प्रोग्राम होने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई बटन होगा, उसको बोलना है गो टू 1000 एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन, ठीक। ऑब्वियसली ये आपस में कनेक्टेड है सब कुछ, या ये भी आपस में कनेक्टेड है, डेटा बस से, एड्रेस बस से कनेक्टेड है। सो जैसे उसको बोला कि स्टार्ट रनिंग फ्रॉम 1000, व्हाट माइक्रोप्रोसेसर डू, 1000 वाला इंस्ट्रक्शन पड़ेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर 1002 वाला, फिर 1003 वाला, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, ऐसा तक लास्ट में जाएगा 1014 तक। वो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद दैट इज नॉर्मली स्टॉप इंस्ट्रक्शन, लास्ट इंस्ट्रक्शन नॉर्मली स्टॉप, तो बिकॉज ऑफ दैट माइक्रोप्रोसेसर स्टॉप वर्किंग, ठीक। तो आपको क्या करना है, मेमोरी में कहीं पे तो प्रोग्राम स्टोर करना है, कहाँ पे करना है वो आपकी मर्जी होती है। मैंने एग्जांपल लिया 1000 से लेके 1014 तक आपने 20 बाइट्स का इंस्ट्रक्शन सेव किया। व्हाई 20 बाइट्स, बिकॉज वन इंस्ट्रक्शन इज 1 बाइट हेक्साडेसिमल कोड, ऐसे आपने 20 बाइट का इंस्ट्रक्शन लिख दिया, ठीक। वो 20 बाइट्स यहाँ पे स्टोर है, यहाँ से आपने कीबोर्ड में टाइप किया, वहां पे सेव हो गया। फिर आपको उसको बोलना है ओके स्टार्ट रनिंग फ्रॉम 1000, ये सब आप यहाँ से कीबोर्ड से करोगे। तो प्रोग्राम माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, यहाँ से एक एक इंस्ट्रक्शन पढ़ना शुरू करेगा, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। वो करने के लिए वो रैम का यूज करेगा, दूसरे कोई डिवाइस का यूज करेगा, अंदर ही अंदर कुछ काम करेगा। It can do the operation inside itself. It can work with memory for some operations, or it can perform operations with some other devices. And for that, it will use all the buses: data bus, address bus, control bus. ये सब buses use है इसमें। ठीक, तो मैंने आपको रफली बता दिया कि प्रोग्राम कैसे चलता है यहाँ पे, ठीक है, कैसे लिखते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, अभी आपको एक थोड़ा सा पिक्चर आएगा कि प्रोग्रामिंग कैसे होगा, ठीक। अभी हम लोग एक्चुअली एक एक इंस्ट्रक्शन सीखेंगे। So I'm just removing it. आपको याद रखना है 1 byte data is 2 digit data, hexadecimal data 00 to FF. 2 bytes data is 4 digit data which is 4 digit 0002 to FFFF. Okay. Okay. Now get ready to start. You can go on noting down the things as I explained. दो तीन लाइन में आप हर एक इंस्ट्रक्शन को लिख सकते हो मेरे साथ, एग्जाम्पल लिख सकते हो, फटाफट लिख सकते हो मेरे साथ, बिकॉज कुछ इंस्ट्रक्शंस बिगिनिंग में काफी इजी होंगे। Okay. Now for your reference, I'll draw microprocessor in the rough. ठीक है, ये अपना माइक्रोप्रोसेसर है 8085 एंड दिस इज कनेक्टेड टू मेमोरी। ठीक, यहाँ पे मेमोरी कितने बाइट का होगा, मेमोरी कैन बी मैक्सिमम 64 किलोबाइट्स बट कैन बी 8 किलोबाइट्स 10 किलोबाइट्स, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सो दिस मेमोरी मतलब रैम। Okay, they are connected with 3-4 kind of buses. One is address bus, यहाँ से वो एड्रेस देगा। ठीक, ये सब डायग्राम ड्रॉ किया था। फिर यहाँ पे डेटा बस है, वैसे दोनों अलग नहीं होते, they are multiplexed, part of it is multiplexed। एड्रेस बस है, डेटा बस है, और कुछ कंट्रोल सिग्नल्स भी, इज इट रीड राइट IO/मेमोरी बार। ठीक, ओके। मेमोरी कहाँ से चलता है, 0 0, फर्स्ट बाइट इज 0, then 1, then 2 एंड सो ऑन, ऐसे कुछ एड्रेसेस होते हैं यहाँ पे। ठीक, और लेट्स से यहाँ पे लास्ट एड्रेस है 3000, दिस एग्जांपल। ठीक,
और यहाँ पे कुछ डेटा स्टोर्ड है ऑलरेडी मेमोरी के अंदर, कुछ डेटा स्टोर्ड है, ऐसा एग्जांपल है। ये कुछ एड्रेसेस है और यहाँ पे कुछ डेटा स्टोर्ड है। एग्जांपल इज 1000, लेट्स से 14, 1015, 1016। ओके, बाय द वे 1016 वाला नहीं, हेक्साडेसिमल डेटा है, 1014H हेक्साडेसिमल, ये हेक्साडेसिमल। ठीक, ऑल दीज आर हेक्साडेसिमल डेटा, हेक्साडेसिमल एड्रेसेस। ठीक, एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कुछ वैल्यू स्टोर्ड है 5, यहाँ पे कुछ है 7, यहाँ पे कुछ है 0A, या यहाँ पे कुछ है 75 एंड समथिंग लाइक दिस। ठीक, ऐसे ही आगे कुछ कुछ एड्रेसेस है, 2050, 2051, यहाँ पे कुछ डेटा पड़ा है 17, 25, एग्जाम्पल डेटा। ये आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हो मेरे साथ, नहीं ड्रॉ किया तो भी चलेगा, समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम्पल लिखा है मैंने, दिस ऑल एग्जाम्पल डेटा। ठीक, सेम वे माइक्रोप्रोसेसर 8085 के अंदर क्या है जो हमारा काम का है, हमारे काम का होता है एक्यूमुलेटर, BC रजिस्टर, D रजिस्टर, HL रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर एंड स्टैक मोटर, ये हमारे लिए मेन होते हैं। दूसरा वैसे फ्लैग भी होता है, लेकिन फ्लैग का भी हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक, तो दीज आर ऑल रजिस्टर्स व्हिच आर 8-8 बिट रजिस्टर्स, BC, DE, HL, ये सब 8-8 बिट के। मैं इसको थोड़ा अलग से ड्रॉ करता हूँ समझने के लिए। BC 8 बिट 8 बिट, DE अगेन 8 बिट 8 बिट 1 byte each, HL अगेन 1 byte each। ठीक, अगेन PCSM, PCN, SPR 16 बिट रजिस्टर्स। ठीक, ओके, एग्जांपल लेते हैं। ए के अंदर कुछ डेटा है 08, या F को छोड़ दो फॉर टाइमिंग। BC हैज सम डेटा सपोज 1050, या D के अंदर कुछ डेटा लेट्स से 2050, ऐसे कुछ। जस्ट टेकिंग सम एग्जांपल्स। ठीक है, दीज आर ऑल एग्जांपल वैल्यूज आई एम टेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंस्ट्रक्शंस। ठीक, ओके, देन HL हैज सम डेटा लेट्स से 1015, कुछ यहाँ पे एड्रेसेस है, जस्ट एग्जांपल है, सॉरी एग्जांपल डेटा। ठीक, okay, this is address bus, this is data bus. Okay, now let's see the instructions. The first instruction that we'll see is called as move instruction. Yeah, the first instruction. You can go on numbering if you want. मैं numbering नहीं करेगा. First time I'm numbering for up to 2-3 instructions. Then you can go on numbering the instructions. Okay. Okay. The first instruction is called move. All the instructions for writing the instruction on paper, they are like this in word format, but they are actually codes. Okay, internally they are codes. लिखने के लिए हम उसको ऐसा लिखते हैं, the instruction move, MOV, move. उसका 3-4 syntaxes है. Move, here it is register 1, register 2. Okay, when I say R, it means register. याद रखो. Yeah, when I say R, it's a register, 8-bit register. Okay, when I say RP, it's a register pair. रजिस्टर पेयर, आपको ये भी याद रखना है, नोट करके बाजू में याद रखो, यू कैन जस्ट नोट इट। या आर मीन्स रजिस्टर, सिंगल रजिस्टर 8-bit रजिस्टर, या आरपी मीन्स रजिस्टर पेयर, मीन्स इट्स अ 16-bit रजिस्टर। आइदर इट विल बी 16-bit रजिस्टर और इट विल बी पेयर ऑफ रजिस्टर्स। कौन सा पेयर होता है? BC इज पेयर, DE इज पेयर, HL इज पेयर, या फिर PC इटसेल्फ इज अ 16-bit रजिस्टर, SP इटसेल्फ इज अ 16-bit रजिस्टर। तो जब इनका पेयर का बात करेंगे या 16 का बात करेंगे तो उसको रजिस्टर पेयर बोलेंगे। सिंगल रजिस्टर का बात करेंगे तो उसको रजिस्टर बोलेंगे। ठीक, एम स्टैंड्स फॉर मेमोरी, M stands for memory. So when I say M, the instruction involves memory operation. When I write R, it involves register operation. When I say RP, it is going to involve register pair operation, 16-bit operation. याद रहेगा, आगे जाते हैं। ठीक है, RP register pair, R register single register 8-bit, M is memory. ठीक है, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन सबसे सिंपल इंस्ट्रक्शन मूव। या मूव R1 R2, what it does, moves, transfers data from register 2 to register 1, copies data from register 2 to register 1. See, for example, if I write move A, B, ये क्या करेगा, B का डेटा A में रख देगा, B डेटा विल बी कॉपीड इनटू A। ये 8-bit डेटा यहाँ पे सिर्फ कॉपी हो रहा है, तो ये 10 भी यहाँ पे, ये 10 जाएगा नहीं, ये यहाँ पे कॉपी होगा, तो A विल चेंज टू 10।
या सेम वे, इफ आई राइट सपोज मूव एल टू बी, एल वाला डेटा, ये वाला डेटा बी में कॉपी होगा, तो कोई भी रजिस्टर से कोई भी रजिस्टर में कॉपी कर सकते हैं। तो सिंगल लाइन कैसे, मूव इंस्ट्रक्शन कॉपीज data 8-bit data from one register to other register, single line instruction, single line explanation. Move R1 R2 copies data from R2 to R1, copy कैसे हो रहा है देखो, arrow B to A, L to B, second to first, उसका instructions का instruction का syntax ही वही, उसका working ही वही, उसका format ही वही, you cannot change the format. Yeah, copies data from one register to other register. Yeah, it's a 8-bit transfer, so it's a data transfer instruction. It's a डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, ठीक, ओके। इसका भी भाई है मूव रजिस्टर टू मेमोरी, मूव रजिस्टर टू मेमोरी, ये क्या करेगा, विल कॉपी डेटा फ्रॉम रजिस्टर इनटू मेमोरी, कॉपीज डेटा फ्रॉम रजिस्टर इनटू मेमोरी। रजिस्टर में कौन से रजिस्टर होंगे, 8-bit रजिस्टर, एक्यूमुलेटर हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी एच एल, कोई भी 8-bit, आई एम टॉकिंग अबाउट आर मींस रजिस्टर, सिंगल रजिस्टर, ठीक, एक सिंगल बाइट रजिस्टर का डेटा मेमोरी में कॉपी होगा। व्हाई सिंगल बिट रजिस्टर, सिंगल बाइट रजिस्टर, 1 बाइट रजिस्टर, बिकॉज मेमोरी के जो डेटा होता है वो भी 8-bit का होता है, 1 बाइट का होता है, ठीक है ना, these are 1 बाइट, ऑल these are 1 बाइट्स, या ओके। तो क्या करेगा, लेट्स टेक एग्जांपल, मूव लेट्स से ई टू मेमोरी, ये क्या करेगा, ई का डेटा मेमोरी में मूव करेगा। तो मेमोरी कौन सा, मेमोरी में तो थाउजेंड्स ऑफ बाइट्स है, मेमोरी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2, 3,000, 3,000, 4,000, कुछ भी हो सकता है। तो डेटा जाएगा कहाँ पे, सो ये इंपॉर्टेंट है कि मेमोरी का डेटा जाएगा कहाँ पे, ठीक, ई से जाएगा मेमोरी में, कहाँ पे, तो ये जो जाएगा कहाँ पे, दैट इज गिवन बाय HL पेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रजिस्टर पेयर इन माइक्रोप्रोसेसर। ऑलवेज मेमोरी रेफर्स टू द एड्रेस गिवन बाय HL पेयर, या HL में जो डेटा है उसको एड्रेस करके एज्यूम करेगा, whatever data in HL is assumed as a address, और वो एड्रेस में ट्रांसफर करेगा। तो ई का डेटा कहाँ पे जाएगा, डेटा इन ई विल बी ट्रांसफर टू द एड्रेस गिवन बाय HL पेयर, सो इट विल ट्रांसफर इनटू 1015। तो ई का डेटा 50 कहाँ पे कॉपी होगा, 1015 में, यहाँ पे, ये वो देखो 1015, यहाँ पे 50 जाएगा। So this will be copied from here to here. ठीक है, तो अभी ऑपरेशन चलेगा कैसे इंटरनली, वजह से मूव ई टू मेमोरी, वो एड्रेस बस पे रख देगा 1015, ये कहां से आ गया, ये आ गया यहां से, ठीक, उसको डेटा राइट करना है ना, डेटा मेमोरी में राइट करना है, ठीक, तो यहाँ पे राइट सिग्नल होता है, रीड सिग्नल होता है, राइट सिग्नल को 0 करेगा, रीड सिग्नल को 1 करेगा, और फिर डेटा बस में कौन सा डेटा रखेगा, 50, ये 50 जाएगा डेटा बस में। मेमोरी को पता चल गया 1015 में राइट करना है, तो डेटा जो आ रहा है वो रिसीव करके यहाँ पे रख देगा। देखो अभी आपको सारे इंस्ट्रक्शन, सारे सिग्नल्स भी समझ में आएंगे कैसे काम करे प्रोग्राम के साथ, ये कैसे चलता है। Okay, I'll repeat. Move register to memory. The 1 byte data from register is copied into memory. Memory address is given by HL pair. Always by default HL pair. Okay, memory मतलब address given by HL pair. तो याद रहेगा address given by HL pair. आप ये सब शॉर्ट नोट्स करके बाजू में लिखा करो, अभी हमको रोज यूज करना है तो डोंट वरी, आपको याद हो जाएगा, ठीक। मूव ई टू मेमोरी, क्या करेगा, will copy data from E register into memory, where memory is an address given by HL pair. HL pair में address क्या है, combination use me 1015, that is 1015. तो 1015 में E का डेटा कॉपी होगा। अब ये कॉपी होने के लिए बसेस कैसे काम करेंगे, तो पहला एड्रेस जाएगा 1015 मेमोरी के पास, फिर राइट सिग्नल एक्टिव हो जाएगा, इस एक्टिव लो, या बिकॉज वो राइट बार होता है तो वो एक्टिव लो होता है तो 0, एंड राइट रीड सिग्नल भी 1 टू इंडिकेट इट्स अ राइटिंग ऑपरेशन, एंड देन दिस डेटा विल बी प्लेस्ड ऑन द एड्रेस बस, डेटा बस, एंड डेटा बस से फ्लो के मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा गिवन लोकेशन के 1015 के अंदर। ऑपोजिट, मूव मेमोरी इनटू रजिस्टर, ये भी इंस्ट्रक्शन है। ये क्या करेगा, कॉपीज डेटा फ्रॉम मेमोरी इनटू रजिस्टर वेयर एड्रेस इज गिवन बाय अगेन HL पेयर। मेमोरी मतलब
एड्रेस गिवन बाय HL पहले, मेमोरी मतलब एड्रेस गिवन बाय HL पहले. तो ये क्या करेगा? फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई राइट मूव, देयर आर ऑल एग्जांपल्स, सो यू कैन गो ऑन राइटिंग द एग्जांपल्स. या इज मूव, सपोज वी से मेमोरी, यहाँ पे सिर्फ आपको मेमोरी लिखना, ठीक, मूव मेमोरी टू लेट्स से बी. ठीक, तो समझो मेमोरी. अच्छा, तो मेमोरी कहां से? मूव मेमोरी टू बी, कॉपी डेटा फ्रॉम मेमोरी इनटू बी रजिस्टर. तो व्हाट इज मेमोरी? 1015. 1015 में अभी क्या है समझो 50 है, तो 50 कहां पे कॉपी होगा? बी के अंदर. अब ये कैसे चलेगा? सेम वे, देखो, क्योंकि उसको अभी डेटा कॉपी करना है मेमोरी से, तो पहले क्या करेगा? मेमोरी का एड्रेस बस पे रख देगा 1015. तो मेमोरी को समझा 1015 पे कुछ तो ऑपरेशन करना है. क्या करना है? दिस राइट बार एंड रीड बार इंडिकेट द ऑपरेशन. क्या करना है? रीडिंग करना है. तो रीडिंग विल बी 0, रीड सिग्नल बी 0 मींस एक्टिव, एंड राइट विल बी इनएक्टिव 1. या वंस इट गेट्स रिसीव्स दिस सिग्नल, मेमोरी नोस की 1015 से उसको एक डेटा चाहिए, तो 105 वाला 50 वाला डेटा वो एड्रेस डेटा बस में रखिए और वहां से ट्रांसफर होकर कहां पे आएगा? बी के अंदर. ठीक, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कुछ इंस्ट्रक्शंस, ताकि वंस यू अंडरस्टैंड यू कैन इमेजिन कि बाकी इंस्ट्रक्शन कैसे काम करेंगे. आई एम ड्राइंग दिस फिगर टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ द इंस्ट्रक्शंस आर रियली वर्किंग. बैकग्राउंड में वो कैसे काम कर रहे हैं. ओके, ये जो इंस्ट्रक्शन थे काफी सिंपल थे, सबसे सिंपल इंस्ट्रक्शंस थे. सिर्फ वो मेमोरी कैसे होता है वो समझना था, बाकी इंस्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं था, सिंपल था. स्टिल यू एनी डाउट्स यू कैन रेज एंड आस्क डाउट. आपको कुछ कॉपी करना है आप कॉपी कर सकते हो, या फिर यू कैन कीप योर बुक ओपन इन फ्रंट ऑफ यू और वहां पे जो मैं इंस्ट्रक्शन सीख रहा हूँ वो इंस्ट्रक्शन ही देखो वहां पे भी. ओके, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो एक्सप्लेन किया है तो वहां पे 4-5 पॉइंट्स दिए उन्होंने. फॉर एग्जाम्पल, पहले तो इंस्ट्रक्शन का नाम लिखा है, उसके बाद एग्जाम्पल होगा, उसका डिस्क्रिप्शन होगा. ठीक, उसके बाद और भी उन्होंने कुछ लिखा है, फ्लैग्स या मशीन साइकिल्स. ठीक, ऐसे कुछ लिखा होगा. ठीक, देन एड्रेसिंग मोड, ये सब हम बाद में सीखेंगे. ठीक, अभी हम लोग उसको सीखेंगे, समझिएगा नहीं. लेट इट बी. कुछ पॉइंट्स उन्होंने हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद 3-4 पॉइंट लिखे, फ्लैग्स, मशीन साइकिल, देन एड्रेस मोड्स, ये सब लिखा होगा. उसको हम लोग फॉर द टाइमिंग नहीं सीखेंगे. नंबर ऑफ बाइट्स फॉर टाइमिंग मैं जितना सीखा उतना समझ लो. उसको भी हम लोग एक सेशन में अच्छा खासा 20-25 मिनट लेके उसको सीखेंगे. ठीक, फॉर द टाइमिंग जैसे मैं सीखा रहा हूँ वैसे सीख. ओके, तो ये हो गए सबसे सिंपल इंस्ट्रक्शंस. ठीक, अभी इसके ही थोड़े से सिमिलर इंस्ट्रक्शंस. बाय द वे, मूव